Hello everyone. This video is also in continuation of my previous series of Mathematics of Finance. We'll be covering further few topics of the same unit, Mathematics of Finance. So the very first topic that I'm picking for you is equation of value. Now what is equation of value? As we all now know that business environment is very dynamic, it keeps changing. It may have impact on our financial transaction. We may be forced to reschedule our financial obligations. For example, if I talk about demonetization time, ऐसा हुआ था कि बहुत सारे लोगों ने एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था. सपोज एक पर्सन मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था कि एक साल बाद वो उसे 3 लाख रुपए वापस करेगा. बट डिमोनेटाइजेशन का जस्ट ऑल ऑफ अ सडन डिसीजन आया तो ही मे हैव रीशेड्यूल्ड कि मैं अब 1 साल बाद नहीं बल्कि 2 साल बाद इतने पैसे और 2.5 साल बाद इतने पैसे वापस करूंगा. सो अभी जो पैंडेमिक चल रहा है, जो लॉकडाउन चल रहा है ड्यूरिंग द स्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस, इसमें दौरान कई लोगों के बिजनेस इफेक्ट हुए हैं, जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है कि कुछ डेटर्स और क्रेडिटर्स आपस में सलाह करें कि अभी जितने पैसे देने थे उस कॉन्ट्रैक्ट में मॉडिफिकेशन करके नई ऑब्लिगेशन तय करते कि इतने ना देकर इतने दिए जाएंगे. सो वी मे हैव टू एक्सचेंज वन सेट ऑफ ऑब्लिगेशंस फॉर अनदर सेट कंप्राइजिंग डिफरेंट अमाउंट्स ड्यू एट डिफरेंट टाइम. जो हमने पहले पैसे देने थे उसकी बजाय में डिसाइड हुआ है कि अब कुछ और पैसे कुछ अलग अमाउंट अलग अलग समय पे दिए जाएंगे क्योंकि सिचुएशन ऐसी हुई है. लेकिन इसको ध्यान में रखते हुए एक ऐसी डेट डिसाइड की जाती है और अमाउंट भी ऐसे डिसाइड करे जाते हैं जो लगभग इक्विवेलेंट हो और जो जिस पर डेटर और क्रेडिटर की आपस में रजामंदी हो, एग्रीमेंट हो. व्हेन वी आर फेस विद सच सिचुएशन वी नीड टू ब्रिंग ऑल द ऑब्लिगेशन टू अ कॉमन डेट कॉल्ड फोकल डेट. जब हम दो ऑब्लिगेशन को आपस में इक्वल करने की कोशिश करते हैं तो हम उसे इक्वल करने की कोशिश एक पर्टिकुलर डेट पर करते हैं, एक डेट को साथ में फोकस करते हुए. सो हम उन ऑब्लिगेशंस को कॉमन वैल्यू पे उतारने की कोशिश करते हैं एट दैट फोकल डेट. नाउ वी देन सेट एन इक्वेशन ऑफ वैल्यू. हम एक ऐसी नई इक्वेशन तैयार करेंगे जिसमें पुरानी ऑब्लिगेशंस नई ऑब्लिगेशंस के बराबर हो इस फोकल डेट पर. देन ओल्ड सेट ऑफ ऑब्लिगेशन और द ओरिजिनल सेट ऑफ ऑब्लिगेशन मस्ट बी इक्वल टू द न्यू सेट ऑफ ऑब्लिगेशन. नाउ so to explain you the same thing in a better way, I have picked up a question for you which says, in return for a promise to receive 6,000 at the end of the 8 years, a person agrees to pay rupees 1,000 advance, rupees 2,000 at the end of 5 years and to make a further payment X at the end of 10 years. एक वादा था जिसमें ये कहा गया था कि 6,000 रुपए दिए जाएंगे 8 साल बाद, बट वो पूरा नहीं हो पा रहा था. तो उसकी जगह इस प्रॉमिस के बदले में, इस प्रॉमिस के रिटर्न में एक नया प्रॉमिस तय किया गया जिसमें ये डिसाइड हुआ कि 1,000 अभी के अभी दे दिया जाएंगे. एट वंस मीन्स इमीडिएटली एंड रुपीज 2,000 एट द एंड ऑफ द 5 years. 5 साल बाद 5,000 दे दिए जाएंगे और 10 साल बाद एक फाइनल पेमेंट की जाएगी X. तो मान लीजिए assuming that the nominal rate of interest is 8% convertible semi-annually, बताइए find the payment at the end of the 10 years. 10 years में जो आखिरी पेमेंट X की जाएगी वो कितनी होगी. ये मान के चलिए कि जो 6,000 8 साल में देने थे ये पुरानी ऑब्लिगेशन है, इसके बदले में 3 नई ऑब्लिगेशन तय हुई हैं, 1,000, 2,000 एंड X. 1,000 देने हैं अभी, 2,000 देने हैं 5 साल बाद और X देने हैं 10 साल बाद. और दोनों ही सिचुएशन में रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% एज्यूम किया गया है, दैट टू कन्वर्टेबल सेमी एनुअली. तो हमें वो एक्स की वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है एट द एंड ऑफ द 10 years. सो आई हैव ड्रॉन अ टेबल in which I have placed old obligation and new obligation in front of each other. On the top of the table I have written focal date is 10 years from now. जिस 10 साल के बाद की हमने पेमेंट निकालनी है हमने उसी को फोकल डेट माना है. तो old obligation is 6,000 at the end of the 8 years and the value of the old obligation will be अगर हम इसकी प्रेजेंट वैल्यू देखें, ये 6,000 तो 8 साल बाद देने थे, ये फ्यूचर वैल्यू. अगर हम इसकी प्रेजेंट वैल्यू देखें तो क्या होगी, दिस इज योर प्रिंसिपल अमाउंट P into 1 plus R की पावर MT, where R will be R upon M. So it was 8% but it will be 8 by 2. So this is basically 1 plus 0.08 by 2 multiply by 2 into 2 because this was convertible semi-annually. Now the new obligations will be which have been decided between both the creditors and debtor is 1,000 अभी के अभी देने होंगे. So 2,000 देने होंगे 5 साल बाद
और x देना होगा 10 साल बाद। अगर इसी क्वेश्चन को मैं एक नंबर लाइन की तरह दिखाने की कोशिश करूं तो जो पुरानी ऑब्लिगेशन थी, ओल्ड ऑब्लिगेशन, वो थी 6008 साल बाद दिए जाएंगे। और अगर मैं इसे फोकल डेट तक पहुंचाना चाहूँ तो मुझे इसके कितने साल बाद की वैल्यू देखनी है, 9वां और 10वां साल, 9th एंड 10th ईयर, दिस मीन्स फर्दर 2 years। अगर मैं बात करूं 1000 जो अभी के अभी दिए जाने हैं, इसकी मुझे कितने साल बाद की वैल्यू कैलकुलेट करनी है टेबल में, 10 years बाद, पूरे मुझे 10 साल आगे तक देखना है। अगर मैं बात करूं 2000 की तो ये 2000 ऑलरेडी 5 साल बाद की फिगर दिया हुआ है, तो इस 2000 को मुझे कैसे कैलकुलेट करना है, फर्दर 5 years बाद इसकी फ्यूचर वैल्यू कितनी होगी। और ये जो x है, ये x तो है ही 10 years बाद, तो इसको कुछ भी नहीं करना है। बट मैं ये कहना चाहती हूँ कि ओल्ड ऑब्लिगेशंस के लिए आपका t जो है वो 2 years है, क्योंकि ये 6000 वैल्यू ऑलरेडी 8 साल बाद दी हुई है। तो आपको कितने कदम आगे चलना है, 2 years। अगर हम बात करें 1000 की तो ये वैल्यू है इमीडिएटली, राइट अवे, तो आपको कितने साल आगे चलना है, 10 year। अगर मैं बात करूं 2000 की तो ये वैल्यू आपको 5 साल बाद की दे रखी, तो आपको कितने कदम आगे बढ़ना है, 5 steps आगे, तो 5 years। और ये वैल्यू तो है ही ऑलरेडी 10 साल बाद। So this means for 6000 t is 2 years, for 1000 t is 10 years, for 2000 t is 5 years, and for this x t is nothing. Now I will formulate an equation. Since the value of the old and the new obligation at the focal date should be equal, we have हमारी फोकल डेट पे पुरानी और नई ऑब्लिगेशन की वैल्यू बराबर होनी चाहिए। तो हमारी इक्वेशन निकल कर आती है 6000 ब्रैकेट स्टार्ट 1.04 की पावर 4 because this was calculated here is equal to 1000 ब्रैकेट स्टार्ट 1.04 की पावर 20, 2000 ब्रैकेट स्टार्ट 1.04 की पावर 10, ये 20 और 10 यहां से आया है, 2 into 10 years, 2 into 5 years plus x. Now what will be the value of x? X is equal to this 6000. I will take both these two values on the right hand side. So this will be deducted, minus 1000 bracket start 1.04 की power 20 minus 2000 bracket start 1.04 की power 10. Now I will use my table to calculate the value of 1 rupee at 4% rate of interest after 4 years, after 20 years and after 10 years. So the table is, let me show you the table. For 0.04 I will look into this table, the present amount at compound interest at 4%. So for 4 years the value is 1.1698, for 10 years the value is 1.4802, for 20 years the value is 2.1911. So I will be using 1.1698, 1.4802 and 2.1911. So these values will be placed at their respective places and will be multiplied using calculator into 6000, into 1000 and into 2000, and it will be further calculated to get the answer 1867.30 rupees. So this will be the final payment जो इस डेटर को अपने क्रेडिटर को लास्ट में 10 साल बाद करनी होगी. Now the next topic is discounting. It is present value at discount rate. So the formula is P is equal to S1 minus D की power n. When we were talking about compound interest, the formula was P is equal to S is equal to P 1 plus R की power n. Here I was adding the R because principal value में interest add होके amount बनना था. I was adding the R for particular number of years. Now it is the reverse thing. I am trying to calculate P using S, and instead of R I am using a discount rate, so it will be deducted. It will be a minus sign will be used instead of plus. So I am picking up a question to explain you a better in way. If rupees 5000 is due in 2 years and 8% rate of interest discount convertible quarterly, find the present value and the amount of discount. So the question is saying it is convertible quarterly. Since the discount rate is convertible quarterly, the present value is given by the formula which I explained you above. P is equal to S1 minus D की power n. So S in this case is 5000. D is 0.08 by 4 equal to 0.02. I have divided it by 4 because it is convertible quarterly, and n is T multiplied by number of years. 4 into 2 equal to 8. Now P is equal to
5,000, I'm placing 5,000 at the place of S, bracket start, 1 minus discount rate is 0.02 ki power T, which is 8. So I'll get 5,000 into 0.98 ki power 8. So I'll be using calculator to multiply 0.98 the 8 times. So if I multiply 0.98 8 times, I'll get 0.850763. And multiplying it by 5,000, I'll get 4253.81. So the present value is 4253.81 paisa. In the rupees I'm expressing it. If you will not mention the unit in which the thing is expressed, your marks may be deducted. Now what will be the amount of discount? Since the value was after 2 years was 5,000 and its present value is this, so what is the rate of the what is the amount of the discount? The rate of the discount was 2%, which was actually 8% convertible quarterly, and the amount of discount is 746 rupees 19 paisa. Now another topic is nominal and effective rate of discount. It is quite similar to what we did nominal and effective rate of interest, where we calculated RE using R or normal R. So here I am calculating DE, which is the effective rate of discount, using a normal D. This is effective rate of discount and this is normal D, and this M is the number of conversion periods in a year. The compounding frequency, it may be convertible semi-annually, annually, monthly, quarterly. Accordingly will you place the value of M. So this is a simple formula which can be used in any question according to the details given in the question. Now I'm taking up a question which is not related to this formula, but a very general question and is not covered earlier, and a very important one which has come in university exams. So let's start with this. The amount of ₹1 in 2 years at a certain nominal rate of interest plus the present value of ₹1 due in 2 years at the same nominal rate of discount, both rates convertible half yearly is this. वो कह रहे हैं कि ₹1 की 2 साल बाद वैल्यू देखी जाए. जब हम बात कर रहे हैं नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट की, अब हम इंटरेस्ट की बात करें, उसी ₹1 की वैल्यू में हम ऐड करेंगे ₹1 की वैल्यू जो 2 साल बाद ड्यू गया एट सम नॉमिनल रेट ऑफ डिस्काउंट. इन दोनों चीजों का आपस में प्लस कर दें और ये ध्यान में रखते कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने लिया है इट विल बी कन्वर्टेबल हाफ ईयरली, तो उसका एडिशन इतना आता है. तो बताइए रेट ऑफ डिस्काउंट कितना होगा. एक तरफ वो कह रहे हैं कि ₹1 की वैल्यू 2 साल बाद एट किसी नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, और वो कितना है हमें नहीं बताया गया. इसी तरह दूसरी तरफ कहा जा रहा है ₹1 की वैल्यू 2 साल बाद एट सेम नॉमिनल रेट ऑफ डिस्काउंट. ये भी हमें बताया नहीं गया कि रेट ऑफ डिस्काउंट कितना है, बट इतना बताया गया कि जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है उतना ही रेट ऑफ डिस्काउंट है. इन दोनों ₹1 की वैल्यू को आपस में जोड़ दें और ये ध्यान में रखते हुए कि जो आपका नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट या नॉमिनल रेट ऑफ डिस्काउंट है ये कन्वर्टेबल हाफ ईयरली है, तो इन दोनों का एडिशन आपस में इतना आता है. तो बताइए रेट ऑफ डिस्काउंट कितना होगा. तो आई assume let R be the nominal rate of interest or the nominal rate of discount, because the question says these two are same. Now for the interest calculation, your formula is this: S is equal to P bracket start 1 plus I की power n. Here n is since 2 years and it is convertible half yearly, so it will be 2 into 2, that is 4. And for discount calculation, P is equal to S 1 minus I की power n, that is 1 minus I की power 4 because it is 2 into 2 again. Now the question says कि अगर आप इसको और इसको आपस में जोड़ दें तो आपकी वैल्यू इतनी आती है, 1 plus I की power 4 plus 1 minus I की power 4 is equal to this. Now using the mathematical knowledge which you gained in the school, there was a theorem that you studied, binomial theorem of expansion formula, which gave you two formulas, a plus b की power 4. The formula says a plus b की power 4 is equal to a की power 4 plus 4a cube b plus 6a square b square plus 4ab cube plus b4, and a minus b की power 4 is a4 minus 4a cube b plus 6a square b square minus 4ab cube plus b4. अगर हम इन दोनों को ऐड कर दे तो हमारा नया फॉर्मूला निकल कर आता है a plus b की power 4 plus a minus b की power 4 is equal to a4 दो बार हो गए 2a4, 4a क्यूब और माइनस 4a क्यूब आपस में कैंसिल हो गए, एंड 6a स्क्वायर प्लस 6a स्क्वायर b स्क्वायर दो बार आ गए, तो ये हो गया 12a स्क्वायर b स्क्वायर. 4ab क्यूब माइनस 4ab क्यूब आपस में कैंसिल हो गए, एंड b4 प्लस b4 इज इक्वल टू 2b4. नाउ if I use this last line in the similar situation which is given to me in the question, I will get at the place of 2a4 I will get 2 because my a is 1, and at the place of 2b4 which is I in my case I will get 2i4, 2i की power 4.
and at the place of 12a square b square, since my a and b is I and I, so I will get 12i square is equal to this. Now I'm taking 2 common from both sides and removing, I will get I4 plus 6i square minus this, because I have divided this number by 2 and I got this is equal to 0. Now I square is a variable for which I can calculate the value using the formula again studied in school times, where x is equal to minus b plus minus square root starts b square minus 4ac upon 2a. This was the formula for deriving the value in such kind of equation of this variable I square. Now if I proceed further, I will get I square is equal to minus 6 plus 36 plus 0.009 को अगर हम ऐड कर देंगे तो it will become 36.00960064 divided by 2. Then further step, I divide this minus 6 by 2, I will get a minus 3, and I also want to divide this whole number by 2. If I take this number in the square root, it will become 4 instead. 2 की बजाय वो 4 हो जाएगा अगर हम उसे स्क्वायर रूट के अंदर लेकर जाएंगे. Then the new equation will come out to be minus 3 plus minus. I will divide this number by 4 using calculator. I will get 9.00240016. Then I square is equal to minus 3 plus minus. I will do the square root of this number using calculator. And then if I since this I indicates rate of interest and rate of discount and they cannot be negative, so I am rejecting this negative value and my number will come out to be 0.0004. Now I square is equal to this, so I will be equal to the square root of this, which will be equal to 0.02. And as I know that I was r by 2 because question में बोला गया था कि convertible half yearly है, तो r की वैल्यू कितनी आ गई जो कि पूछी गई थी, r is equal to 2i, therefore r is equal to 0.04 and you can say r is equal to 0.04 multiplied by 100 equal to 4%. Now the last topic for this chapter, Mathematics of Finance, is depreciation. I will be covering 2 questions on this. So what is depreciation? As you all know that this is the decrease in the value of an asset due to wear and tear. So in maths, how do we calculate depreciation? This topic is all about. Now book value after n years, एक particular asset की n years के बाद book value कितनी होगी, उसके लिए क्या formula है? Sn, that is the book value after n years, is equal to C bracket start 1 minus r की power n. C is the cost of the asset and r is the rate of the depreciation and n is the estimated useful life of the asset. Now this is the formula I'll be using in the question, and you may get a question from depreciation topic for sure in your exam. Now I have picked up 2 important questions which will help you understand the concept in a better way. So the question is, a machine costing rupees 2,40,000 is depreciated at 18% per annum on reducing balance method. Find the value of machine after 6 years and also find the depreciation amount for the 6th year. एक मशीन की कीमत 2,40,000 है और उसको 18% per annum की ब्याज रेट पर depreciate किया जाता है using written down value method, or you can say diminishing balance method or reducing balance method. Now you need to find the value of the machine after 6 year. आपको बताना है कि 6 साल बाद उसकी वैल्यू कितनी रहेगी और छठे साल का कितना डेप्रिसिएशन है. तो मान लीजिए आपका कॉस्ट इज 2,40,000, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 18%, उसकी बुक वैल्यू 6 साल बाद कितनी होगी, इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? आई विल सिंपली पुट द पर्टिकुलर्स given in the equation in the equation explained you above. So S6, because my purpose is to find the book value of the machine at the end of the 6th year, so I am finding S6 instead of Sn. I am finding S6. S6 is equal to C bracket start 1 minus r की power 6 is equal to 2,40,000 bracket start 1 minus 18% is the rate की power 6. That is 2,40,000 multiplied by 0.82 की power 6. So I use a calculator and multiply 0.82 6 times. I will get 0.304. So 2,40,000 into 0.304. My value after 6 years will be this much. एंड ये 6 साल बाद अगर एसेट की वैल्यू इतनी आ जाती है और अगर ये भी पता चल जाए कि 5 साल बाद कितनी थी और 6 साल बाद कितनी थी, तो ये पता चल जाएगा कि छठे साल का डेप्रिसिएशन कितना था. तो अब हम इसी तरीके से एक बार 5th ईयर की वैल्यू निकाल लेंगे. बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ द 5th ईयर इज इक्वल टू S5 इज इक्वल टू C ब्रैकेट स्टार्ट 1 माइनस r की पावर 5 बिकॉज दिस इज द
n in this case, 2,40,000 bracket start 1 minus 0.18 की power 5, that is 0.82 की power 5. Using a calculator I will multiply 0.82 5 times, I will get 3707. So 5 साल बाद इसी एसेट की बुक वैल्यू थी 88,968. अगर 5 साल बाद इतनी थी और 6 साल बाद उसकी वैल्यू इतनी रह गई, तो इन दोनों को आपस में डिडक्ट कर देंगे तो पता चल जाएगा छठे साल कितना डेप्रिसिएशन लगा. सो द डेप्रिसिएशन अमाउंट फॉर द 6th year is the book value at the end of the 5th year minus the book value at the end of the 6th year, and you get 16,008. So the depreciation amount for the 6th year is 16,008. Now the last question for this topic and as well as for this unit, this chapter, mathematics of finance. So this is 21st question. A machine depreciate at the rate of 8% for first 2 years. एक मशीन को 8% रेट के दर पर हम डेप्रिशिएट करते हैं पहले 2 साल, फिर 10% रेट पर करते हैं फॉर द नेक्स्ट 3 years, एंड देन एट द रेट ऑफ द 15% पर आना, और फिर उसको हम 15% पर आना की रेट पर डेप्रिशिएट करते हैं. तो बताइए कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द मशीन एट द एंड ऑफ द 10 years. 10 साल के बाद उस मशीन की वैल्यू कितनी होगी. तो इस 10 साल में पहले 2 साल पर उसको 10% की रेट पे डेप्रिशिएट किया गया होगा, फिर 3 साल उसको 15% की रेट पे डेप्रिशिएट किया गया होगा, और 2 + 3 हो गए 5, 10 में से 5 गए, बच गए 5, तो बचे हुए 5 साल के लिए उसे 15% रेट पर डेप्रिशिएट किया गया होगा. अगर शुरुआत में मशीन की इनिशियली वैल्यू 1 लाख थी, तो बताइए उसकी 10 साल बाद वैल्यू कितनी होगी. और ये भी बताइए कि ये तो रेट अलग अलग दिए गए हैं 8%, 10%, 15%. अगर उस पूरे 10 साल को देखें तो व्हाट वाज द एवरेज रेट ऑफ डेप्रिसिएशन. नाउ द बुक वैल्यू ऑफ द मशीन आफ्टर 10 years is calculated below. So how the book value will be calculated? By using the same formula, which was Sn is equal to C bracket start 1 minus r की power n. So it is 10 years, S10 is equal to 1 lakh bracket start 1 minus, तो पहली बार रेट ऑफ डेप्रिसिएशन था 8%, इट इज 0.08 फॉर 2 years. देन फॉर 3 सालों के लिए रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 10%, 1 minus 0.10. एंड देन बचे हुए 5 सालों के लिए, क्योंकि हम वैल्यू निकाल रहे हैं 10 साल की, 2 साल, 3 साल और 5 साल, बचे हुए 5 सालों के लिए रेट ऑफ डेप्रिसिएशन था 15%. सो हाउ द वैल्यू विल बी कैलकुलेटेड. यूजिंग द कैलकुलेटर आई विल मल्टीप्लाई 0.92 twice, 0.90 thrice, and 0.85 5 times. So I will get 1 lakh into 0.8464 multiplied by 0.729 multiplied by 0.4437, and the value of the machine after 10 years will be 27,377.43 पैसा. Now to calculate कि अगर depreciation 2 साल लगा 8%, 3 साल लगा 10% और 5 साल लगा 15%, लेकिन पूरे 10 साल में देखा जाए तो एवरेज रेट कितना लगा, तो उसके लिए भी सेम तरीका है. लेट द एवरेज रेट ऑफ डेप्रिसिएशन बी आर. अब हमें एक सिंगल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालना है आर. देन अप्लाइंग द सेम फॉर्मूला एस एन इज इक्वल टू सी 1 minus r की पावर n. यहाँ पे आपका n 10 साल ही है, लेकिन वैल्यू अब पहले से पता है कि 10 साल बाद वैल्यू इतनी हो गई है. अगर शुरुआत में वैल्यू थी 1 लाख, तो बताओ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना लगा होगा 10 साल के लिए. तो हम इस 1 लाख को लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे और डिवाइड कर देंगे इस नंबर को. हमें मिलेगा 0.27377743 इज इक्वल टू 1 minus r की पावर 10. नाउ दिस नंबर कैन बी राउंडेड ऑफ एज 0.2738 to 4 digits. Then further it can also be rewritten as 2738 divided by 10,000 is equal to 1 minus r की पावर 10. इस तरह के नंबर को सॉल्व करने का एक ही तरीका है, टेकिंग द लॉग बोथ द साइड्स. इफ आई टेक लॉग हियर, सिंस ये आपस में a डिवाइडेड बाई b हो रहे हैं, अगर हम a डिवाइडेड b का लॉग लेते हैं तो मिलता है log a माइनस log b, दैट इज log 2738 माइनस log 10,000. और अगर ऐसी चीज का लॉग लेते हैं जिसकी कोई पावर है, तो पावर नीचे बाहर सामने आ जाएगी 10 log 1 माइनस r. log 2738 की वैल्यू अगर हम अपनी टेबल से देखें तो आपको देखना होगा लॉग टेबल के अंदर 27 रो के अंदर 3 का कॉलम एंड 8 का कॉलम. सो आई विल लुक इनटू द टेबल एंड हियर आई विल लुक इन द रो ऑफ 27 third column and then 8th column. The third column says it is 4362 and then the 8th column says it is 13. I will add 4362 and 13. I will get 4375. So I will get 4375 behind the decimal, but before decimal I need to place, since these are 4 digits, I will place 4 minus 1 3 here,
Now minus log 10,000 is 4, log 10 is 1, log 10 is 1, log 100 is 2, log 1000 is 3, log 10,000 is 4. So log 10,000 is 4. So this will be equal to 10 log 1 minus r. Now I will deduct this. I will get 0.5625 equal to 10 log 1 minus r, and I will divide this number by 10. I will get minus 0.05625 equal to log 1 minus r. Since this number is negative, I cannot take the antilog of both the side. To make this antilog eligible, I need to add minus 1 and plus 1. I will subtract 1 and add 1, and the new number that I will get will be, so it will be 1 bar 0.94375. So how this is calculated? The minus 1 became 1 bar and the positive 1 is added to this number, and I got 0.94375. So using these two values, I got 1 bar 0.94375. Now this is eligible to take anti-log. So this number is equal to log 1 minus r. Since I need to derive the value of r, I'll take anti-log both the sides. Taking the anti-log of this number and taking anti-log of this, log will cancel the anti-log and I'll get 1 minus r here. So I will use my anti-log table to find the value of 0.94375. So this is my anti-log table, and 0.94 is here. This is the third column. This is the third column, 8770, and this is the seventh column, 14. So 8770 plus 14 is 8784, and since this is minus 1 में हम 1 ऐड करेंगे, हमें मिलेगा 0. तो हमें 0 के बाद मतलब कि डेसिमल लगाना है. 0.8784 is equal to 1 minus r. So r is equal to 1 minus 0.8784, or you can say it is 0.1216, or you can multiply this number by 100 and you will get 12.16%. So your answer is 12.16%. In case of any query, you can contact me on WhatsApp or Google Classroom. Thank you very much.